Good morning, students. Today I am going to describe your next grammar topic of your grammar English book, Total English of 10th grade. Let's open your second chapter, subject verb agreement. What do you mean by subject? Subject, the naming part of the sentence, is called subject. For example, he, she, it, I, we, they, you. Verb, what do you mean by verb? As I told you so many times in the class, the action word, the action things is called verb. For example, drinking water, cooking food, like that. ठीक है, verb is maybe a present, past and future. Agreement. Now in this chapter, the verb must agree with the subject in number and person. That is, the verb should be of the same number and person as the subject. Means we have to put the verb according to the subject, according to their numbers and person of the subject. Let's have a look on the rule, verb, example. Okay, first, two or more singular subjects connected by and, then we add plural verb. Sudha and her sister have done the mischief. Sudha and her sister both are singular subjects but connected by and, so we put plural verb. Clear? Both are singular subjects but connected with and, so we will put plural verb. One more example, he and his brother were present. Clear? He and his sister were present at the hall, like this. Number two, two or more singular subjects preceded by each and every, connected by and. Now when we each and every connected by and, then we will put singular verb. ठीक है, plural verb, which are they? Are, have, were. Singular verbs, which are is, was and has. Every man and every woman was thoroughly frisked. Every man, woman and child in the village was vaccinated. Each girl and each boy in the class was punished. Clear? Each boy and each girl means दोनों को equally punishment मिली है. Nobody is left, so we will put was. मतलब हमने एक एक singular subjects के according यहाँ पे हमने verb put करनी है. Same, every man, every woman and every child in the village was vaccinated. Clear? When, as I told you also in the class, when you write each and every, then you have to put singular verb. Clear? Singular verb you have to put with each and every. This thing I already told you in the class. Singular verb is, has and was. Next, when two singular nouns refer to the same person or thing. Clear? टू सिंगुलर नाउन्स है बट रेफर टू द सेम पर्सन. ठीक है, नाउन अलग है बट जो एक ही पर्सन को वो प्रेजेंट कर रहे हैं. जब एक पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हैं देन ऑब्वियस है वी विल प्लेस अ सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल, द डांसर एंड सिंगर इज़ डेड. वो डांसर भी था, वो सिंगर भी था, तो मीन्स वन पर्सन इज़ डेड. क्लियर? द पोएट एंड स्टेट्समैन इज़ डेड. The priest and the leader has come. Clear? The priest and the leader, वो priest भी है, leader भी है, has come. When two singular nouns refer to distinct person, यहाँ पे हमने टू सिंगुलर नाउन्स लिए थे, एक पर्सन को प्रेजेंट किया था, बट नेक्स्ट रूल में हम टू सिंगुलर नाउन्स ले रहे हैं फॉर टू डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है, यहाँ पे एक ही पर्सन था इसलिए हम सिंगुलर वर्ब पुट करेंगे. यहाँ पे टू पर्सन्स को हम रेफर कर रहे हैं, सो वी विल पुट प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैव जस्ट एंटर्ड द हॉल. डायरेक्टर, you know, he has in their own business and actor is a different role, so both are different person have just entered the hall. This is the rule. Two singular nouns for two
distinct persons. Clear? For example, one more example I will tell you. The principal and the staff secretary have arrived. Clear? Both are different person. Then we place plural verb. Here you have to main look is that you have to take it very carefully, the verb of singular or plural. Next, when two subjects together express one idea. This one we also conduct in the smart class. When two subjects, you have two subjects but they consider the one idea. Clear? But they consider the one idea. Now again one idea, then we will place singular verb. I hope everybody you are clear. According to subject you have to put the verb. Clear? Here what is that? Subject is more, मतलब subject is plural, verb is plural. Here subject is singular, verb is singular. Again here subject is singular, verb is singular. Here subject is plural, two persons are there, so verb is plural. As I told you, when here is again two subjects but together express one idea. So for one idea we will place singular verb. Bread and butter is his staple diet. Clear? Bread and butter is necessity, not a luxury. These are two examples I told you. Bread and butter means we take a bread के ऊपर हम butter लगाते हैं, तो that is a one slice. Okay, so that is singular. Bread and butter is a staple diet, या फिर bread and butter is necessity, not a luxury. One more example. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins. Here I put S, wins, S. Okay, so S, which shows that for the singular person. Have you remembered the rule of simple present tense? He, she, it, S or es. I, we, they, you without S or es. So slow and steady is a singular subject which we have to put wins, S. Okay, then wins present the singular subject, the race. Here is one more example in your book. Law and order is the main problem in the village. Law and order is, okay, the main problem in the village. I hope everybody clear up to here. Next point. Two or more singular subjects connected by either or, neither nor, or nor. Clear? हमने अभी two singular subjects लेने हैं but they are connected with either, neither, nor. As I told you in the class, neither we present with nor, either we present with or. Clear? Then we place singular verb. Neither you nor I was informed. ठीक है, ना ही तुम्हें और ना ही मुझे इस बात के लिए इन्फॉर्म किया गया था. Was. Either Mohan or Anurag has resigned from his company. Clear बेटा? Either Mohan or Anurag has resigned from the company. ठीक है, या तो मोहन ने रिज़ाइन किया है या फिर अनुराग ने. ठीक है, आई टोल्ड यू इन द क्लास नीदर नोर आपने नेगेटिव के लिए यूज़ करना है, ईदर और आपने ऑप्शन के लिए यूज़ करना है, या तो ये या तो वो. नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स कनेक्टेड बाय or, nor, either or, neither nor. The plural subject comes nearest to the verb. Try to understand this point. Here we take two singular subjects with either or, neither nor. But here subjects of different numbers. सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर्स, मतलब यहाँ पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिला था बट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लूरल में मिल रहा है, डिफरेंट नंबर्स में मिल रहा है. क्लियर? हेमा और हर फ्रेंड्स हैव मेड दिस पेंटिंग. हेमा और हर फ्रेंड्स हैव मेड दिस पेंटिंग. क्लियर? हेमा ने भी ये पेंटिंग बनाई है और उसके फ्रेंड्स ने भी, सब ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है. नीदर द डायरेक्टर nor his employees were present in the conference. बच्चे, हैव यू क्लियर द पॉइंट? ना ही उस डायरेक्टर ना ही उसके एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे. क्लियर? नाउ these both examples shows the
subject in different numbers. Subject different numbers, again director is one, again his employees are more than. all together, जहाँ पे हमने all together थिंग को शो करना है with either nor, either और neither nor के साथ, then we place plural verb. I hope you everybody clear. Next, subjects differing in number or person or both connected by and. Clear? Now we take a subjects differ in numbers, okay, और person और both connected by and. यहाँ पे हमने singular subjects को लिया था, but यहाँ पे हम subjects differ in numbers, then we place plural verb. For example, you, he and I. You, he and I are members of the same club. Have you clear? Here we take a singular subjects, then we place plural verb. But here what we take, both are have a plural verb, but you have just take a little difference is there. Two or more singular subjects, here subjects of different in numbers. You, he and I, ठीक है, these are subjects are members of the same club. You and he are repairing the car, ठीक है, टू पर्सन है इसीलिए हमने यहाँ पे आर लगाया है, दोनों ने मिलके कार रिपेयर की है, सो दैट्स वाई आर. क्लियर बेटा? मूव ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, subjects of different persons joined by either nor, either or, neither nor, or nor, either or, neither nor. Clear? Agrees in person with the one nearest to it. Let's have a look firstly on example. Either he or I am mistaken. ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका सेम चल रहा है, जस्ट यू हैव टू टेक द डिफरेंट पर्सनस. ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है, या तो उसने या फिर मुझसे गलती हुई है. नीदर ही नोर यू आर टू ब्लेम, ना ही उसे और ना ही तुम्हें कोई ब्लेम कर सकता है, ठीक है, कोई ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है. सो दैट इज़ अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट अ लिटिल डिफरेंस दैट यू हैव टू एग्रीज द पर्सन विद द नियरेस्ट ऑफ इट. मीन्स subject are both singular, then we place singular verb. Next, nouns singular in form but plural in meaning. Have you clear? noun जो है वो आपका singular है, okay, and in form but plural in meaning. Okay, let's have a look. Then we place plural verb. The police are looking for clues to trace the culprit. बच्चे क्लियर? पुलिस में एक पर्सन किसी एक केस को फॉलो नहीं करेगा, एक केस को ट्रेस नहीं करेगा क्लूज को, तो पुलिस इज हियर अ प्लूरल. क्लियर? नाउन सिंगल है, ठीक है, पुलिस क्या है? नाउन है, सिंगुलर है. ओके, पीपल क्या है? सिंगुलर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है. पीपल द क्राउड ऑफ the crowd of persons means then we have taken so many persons, that is a people. okay, मतलब people जो village में people है वहाँ पे एक people नहीं रह रहा. okay, like that. The police are looking for clues to trace the culprit. मतलब कि पुलिस में more than one or two persons are there, they are looking for, ठीक है ना, they are looking for the clues. Same example, people in the village आर बिल्डिंग अ न्यू रोड. ठीक है, अब एक पर्सन तो रोड बना नहीं सकता, सो दैट्स वाई पीपल इन द विलेज आर बिल्डिंग अ न्यू रोड. 1 dozen bananas cost 50 rupees. Here is cost again simple present tense, he, she, it, s or es, I, we, they, you without s or es. so 1 dozen bananas cost, यहाँ पे हमने s और es पुट नहीं की है, means this is a plural verb. clear? 50 rupees. The staff have given an ultimatum to the boss. ठीक है, स्टाफ में एक मेंबर नहीं है, ठीक है,
any staff will be there, teaching staff, employee staff, any staff will be there. So staff have given, पूरे staff ने have given, ठीक है, an ultimatum to the boss. Next point, nouns plural in form but singular in meaning, ठीक है. अभी यहाँ पे हमने nouns singular किए थे, यहाँ पे हम nouns plural करेंगे then but singular meaning, ठीक है बच्चे. यहाँ पे आपका plural meaning निकल रहा था, इसलिए हमने plural verb को place किया. यहाँ पे हमारा singular meaning निकल रहा है, तो हम यहाँ पे singular वर्ब को प्लेस करेंगे. दिस थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स इन द क्लास आल्सो, एंड टुडे इन दिस असाइनमेंट आई आल्सो टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब और वर्ब. सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल. ओके, नाउ मीनिंग इज सिंगुलर. गुड न्यूज़ इज़ ऑलवेज वेलकम, ठीक है. यहाँ पे न्यूज़ या आपको ये प्लूरल लगेगा, बट गुड न्यूज़, ठीक है, दैट इज़ any type of news, so that is always welcome. Politics is a dirty game. Clear? Physics is an interesting subject. Next, words joined by with, together with और as well as, ठीक है. जब हम इनके साथ ये वर्ड्स टुगेदर करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे वर्ब को. एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है. द टीचर विद all his subjects students of his class has assigned the letter, ठीक है ना. टीचर, अभी हमने क्या किया, जब हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट प्लेस करेंगे. द टीचर विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, ठीक है. टीचर ने अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स को हैज़ असाइंड द लेटर. दे विद देयर टीचर नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है बच्चे. यू हैव टू टेक इट केयरफुली अबाउट दी सेंटेंसेस, कि आपने सेंटेंस को फॉलो करके देखना है. एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट मीन्स आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस करनी है. बच्चे क्लियर व्हाट आई वांट टू से यू. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ़ यू गॉट विद टुगेदर एज वेल एज, देन बच्चे यू हैव टू सी द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है देन प्लेस सिंगुलर वर्ब. अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है देन प्लेस प्लूरल वर्ब. आई होप यू क्लियर. हेयर इज नीड, बच्चे नीड मतलब देयर इज नो एस और ई एस, सो दैट इज प्लूरल. सब्जेक्ट इज अ रिलेटिव pronoun. ओके, फर्स्ट हैव अ लुक. एग्रीज इन नंबर्स एंड पर्सन विद द antecedent of the relative pronoun. Okay, what is antecedent? The people in somebody's family who lived a long time ago. Clear? What is the meaning of antecedent? The people in somebody's family, ठीक है ना, कोई भी people किसी की family में who lived a long time ago, that is the meaning of antecedent. The people in somebody's family who lived a long time ago means that is called a relative pronoun. ठीक है बच्चे, हमने इसमें क्या यूज़ करना है, जो हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो आपके रिलेशन में है, आपके रिलेटिव है, that is called a relative pronoun also. And antecedent I all told you what is that. Now I am the girl who has won the gold medal, ठीक है. मैं कौन सी लड़की हूँ जिसने गोल्ड मेडल जीता है. सो दैट इज़ द रिलेटिव pronoun. रिलेटिव pronoun कौन सा है इसमें, who. हु इज़ अ रिलेटिव pronoun बच्चे, जब आप किसी को, किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए प्रेजेंट करते हो. आई एम अ मैन हु शन्स पॉपुलैरिटी, ठीक है. अमित इज़ वन ऑफ दोज मैन हु टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, ठीक है. मैन यहाँ पे हुआ मतलब वो बहुत सारे पर्सनस के बीच, मैंस के बीच एक ऐसा अमित ही है हु टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स. क्लियर? अगेन हु, ठीक है, बट दैट इज डिपेंड ऑन योर रिलेटिव pronoun. You who are my driver, you who are my driver should wait for me, ठीक है. antecedent girl, I, man, you, ठीक है, ये antecedent है. बट आपका रिलेटिव pronoun कौन सा है, who मतलब जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो. क्लियर बच्चे? now according to that you have to put the what, you have to put the verb, you have to put the verb according to the person. Again here is you, so we put are.
Here is Amit, is, I am single, and who has. Okay, I hope everybody clear. Here is S, means simple present tense. Next, a collective noun when refers to the collections as a whole. Which collective noun? Have you remembered anything as about the collective noun? Collective noun in which we take a group of same thing, that is called collective noun. अब जब हम collective noun ले रहे हैं, then obvious है we place a singular verb. The crew was large. The jury has given its verdict. One more point is here for collective noun. A collective noun when refers to the collection separately as individuals of which it is formed. ठीक है, उन्होंने बोला कि जब आपको collective जो आप separately individually show कर रहे हो, then we will take plural. अगर आप collectively whole collection को present कर रहे हो, then we take singular verb. Let's have a look on example. Same examples we have to take it that the crew was large. The crew were taken prisoners. Clear? The crew were taken prisoners. The jury are reconsidering their decision. ठीक है, यहाँ पे क्या था, jury has given his verdict. सभी ने combined decision दिया अपना. But here jury are कंसीडरिंग देयर डिसीजन. जो ज्यूरी है, एक एक पर्सन अपने ही डिसीजन पर फिर से रिकन्सीडर कर रहा है. नेक्स्ट, व्हेन अ नाउन डिनोट्स द सेम ऑफ अ प्लेस एंड इंस्टीट्यूशन और द टाइटल ऑफ अ बुक, देन वी प्लेस सिंगुलर वर्ब. उदयपुर इज नोन फॉर इट्स लेक प्लेस. बच्चे, हैव यू क्लियर समथिंग? उदयपुर इज़ नोन फॉर इट्स लेक पैलेस. सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ द 6 organs ऑफ द UNA. बच्चे, व्हेन वी टेक अ नाउन डोनेट्स, ठीक है, नेम, एज यू नो दैट व्हाट इज़ नाउन, नो यू एवरीबडी, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट्स इज कॉल्ड अ नाउन. ओके, सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, उदयपुर, ठीक है, जो उदयपुर है एक जगह का नाम है, पैलेस का नाम है, इज़ नोन फॉर इट्स लेक पैलेस. सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ द 6 organs. जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द 6 organs ऑफ UNA. Gulliver's Travels is an interesting book. Yes, Gulliver's Travels is the name of a book and that is an interesting book. बच्चे, when we will take donates the name of a place, an institution or title of a book, then we place a singular. Gulliver Travels is an interesting book. Then we place a singular verb. Verb beta is. Okay. There is one more other important rules for you. Let's have a look. A plural noun followed by words expressing quantity. ठीक है, expressing quantity. बेटा, जब हम quantity में किसी चीज़ को लेंगे, number of, majority of, lot of, more than, ठीक है, like that, then we place plural. Obviously जब हम नंबर ज़्यादा ले रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, then we will place plural verb. A large number of women were present in the seminar. A large number of women. Okay, हमने नंबर मेंशन कर दिए, so plural verb. A number of students are absent today. Number of students, आप मतलब आज बहुत सारे बच्चे हैं. Number of students are absent today. The majority of voters in the village are illiterate. The majority of voters, ठीक है, जो भी voters हैं mostly they are illiterate. A lot of books are lying on the floor. I hope this concept is very easy. I hope everybody clear. When we show any kind of quantity and in the form of expressing the plural subject, then we place a plural verb. A plural noun followed by words expressing mathematically figure like number of, then singular. ठीक है, the number of illiterate people is decreasing.
ठीक है. द नंबर ऑफ illiterate people is decreasing. Here we take a followed by quantity as a number of, but here a plural noun followed by word expressing mathematically. अगर हम मैथमेटिकली किसी चीज़ को ले रहे हैं इंग्लिश में तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब को प्रेजेंट करेंगे. ओके, here is not any kind of mathematically things are there. That's why I'm told you again. I know this question come up in your mind, so that's why I told you here is not any kind of mathematically things, but here is a mathematically number of. The number of illiterate people is decreasing. The number of, okay, मीन्स जब हम नंबर ऑफ में illiterate पर्सनस को ले रहे हैं काउंटिंग में ले रहे हैं, बट हेयर हम क्वांटिटी में ले रहे हैं. सो डोंट बी कन्फ्यूज. हेयर इज़ क्वांटिटी, हेयर इज़ नंबर मैथमेटिकली. लॉट्स ऑफ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. लॉट्स ऑफ के लिए आप दोनों ही सिंगुलर प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हो. कैसे? लॉट्स ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड. ठीक है, वाटर इज़ अनकाउंटेबल नाउन. यू नो दैट ऑयल, वाटर, iron, silver, gold. And for uncountable nouns mostly we will place a singular verb. Plural, lots of people are still on the road. ठीक है, these are countable. ठीक है, in short form I told you uncountable noun with lots of place singular verb. Countable noun with lots of you have to place plural verb. Lots with an infinitive singular. Okay, there is lots to be done on the project. बच्चे infinitive to, as I told you what is infinitive? To plus verbs first form when we conduct it as a, that is a infinitive. But if we take a to in passive, then with we are at the be plus verbs third form. That's why there is lots to be done on the project. When an identified number quantity is followed by of noun, for example in bracket a good, great deal of, most of, plenty of, a part of, handful of, lots of. Have you noticed something? Of singular with the singular noun placed after of and plural with the plural noun placed after of. बच्चे, have you clear this point? Followed by of. Here is, have you see that? Of plus. ठीक है, उसके बाद they have given a bracket, some words are there. Means if you get singular with the singular noun, ठीक है, placed after of, तो आपने singular present करना है. अगर आप plural with the plural noun ले रहे हो after, placed after of, then you place plural. Let's have a look on examples. Plenty of water is required. Plenty of oranges are needed to make this dish. बच्चे क्लियर? अगर आप सिंगुलर चीज़ ले रहे हो तो सिंगुलर नाउन ले रहे हो तो आपने सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट करनी है. प्लूरल नाउन ले रहे हो तो प्लूरल करनी है, बट बाय एडिंग द ऑफ. इन ऑफ यू हैव टू टेक दिस रूल. अ कपल ऑफ चेंजेस आर required. A handful of men agree with him. I hope everybody you have to clear this chapter subject verb agreement. Here is a one exercise that is your wish if you want to do at home, but exercise with pencil. Try to read these rules at home. Thank you. Have a nice day.